देखो अभी मेरे तरफ 15 दिवस नाही असणार आहे. 15 दिवस जानेवारीमध्ये सगे भाई की शादी, सख्खा भाई की शादी। तुम्हारे शादी के बारे में सोच आई थॉट ओनली मेरे को लगा ही था ये बोलेगी। मला वाटलं तुम्ही असं म्हणणार. एक्सपेक्टेड था आपका ये। देखो अभी मेरे तरफ just have a quick concentration now. देखो अभी मेरे तरफ रिकॉर्डिंग सुरू आहे ना? बस. All right. So yesterday we said that the classes are of two types. What are the two types? Inclusive classes. No. Inclusive classes include the upper limits. Exclusive classes exclude the upper limits. Inclusive classes are also called non-overlapping classes. Exclusive classes are also called overlapping classes. We said ahead that the weight value of the class mark is equal to what? Upper boundary plus lower boundary over 2. Class width or class interval is equal to upper boundary minus lower boundary. Frequency density is the frequency upon the width of the class. And the relative frequency is the frequency upon the total frequency, and the sum of relative frequencies is equal to 1. समझो कहीं? समझो. अभी जरा मेरे तरफ देखो. Look at me. Look at me. होता है ना? देखो अभी मेरे तरफ. That suppose if I consider the marks. Marks means marks in the exam. Not the marks at somewhere anywhere. I consider the marks. And suppose the marks are 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and suppose 40 to 50. मेरा आपसे सवाल है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? In this case, it will be the number of students, in general number of people. Suppose this is 7, suppose this is 13, suppose this is 15, suppose this is 8, and suppose this is 7. Samjha? Now my question to you is, tell me, tell me 0, 10, 20, 30, 40, 50.
tell me how many are between 0 and 10? 7. How many are between 10 and 20? How many are between 20 and 30? How many are between 30 and 40? And how many are between 40 and 50? अभी तो मेरे को बोलो, how many students are below 10? How many students are below 10? And these are what? 7. Now my question to you is, tell me how many are below 20? Now when I say below 20, 0 to 10 will also come below 20. 10 to 20 will also be below 20. So below 20 का मतलब हो गया ये पूरा इंटरवल. और इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? किसमें क्या होगा? किसमें ब्लश होगा ना, किसमें? तो दिस इज 20. समझा? How many are below 30? How many are below 30? Now that is going to be this 20, already those we have here, and that plus 15, that is equal to 35. So these are the number of people below the upper limit, less than the upper limit, and such cumulative totals. Cumulative matlab accumulated, collectively. Such cumulative totals are known as the less than cumulative frequencies. These are known as what? Less than cumulative frequencies. Cumulative का मतलब क्या होता है? Addition. अभी ये less than मतलब less than what? ये MCQ हो गया. Less than मतलब less than what? Less than मतलब less than upper limit और upper boundary, जो भी कहेंगे. एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि जब तक हम इंक्लूसिव क्लासेस का कन्वर्जन एक्सक्लूसिव क्लासेस में करते नहीं है तो कुछ भी करना अलाउड नहीं है. तो ये अपर बाउंड्री होगा. तो दीज आर लेस देन द अपर बाउंड्री. ऑलराइट. तो हाउ मेनी? नाउ हियर आई टेक द टोटल्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो व्हाट विल इट बी? दिस इज 7. What would this be? This is 7 plus 13, which is equal to 20. This is 20 plus 15, that is equal to what? 35. This is 35 plus 8 is 43. 43 plus 7 is 50. And mind well, capital N means sigma F, and that is equal to 50. कहो ना समझ गया? अभी मेरे को बोलो, मेरे का अभी तुम मेरे को बोलो, how many are above 40? 7. And these are 7. Now my question is, how many are above 30? So that is going to be this 8 plus that 7. This is going to be this 8 plus this 7, which is equal to what? 50. समझा तुमको? So what we have done now is, this is below 40, below 30, below 20. This is below. This is what? Below. And your age is of remaining what? With pillow. बराबर ना? And therefore, I find out what are called more than cumulative frequencies. I find what are called more than cumulative frequencies, and they are more than what? They are more than what? They are more than the lower limits, or they are more than the lower boundaries. समझा? अभी in this case we take the totals in the upward direction. तो ये पहला जो 7 है वो 7 ही रहेगा. फिर this is going to be 7 plus 8, which is equal to what? 15. Then this is 15 plus 15, this is equal to what? 30. फिर 30 plus this is 43, and 43 plus 7 is what? 50. बात ये समझा क्या तुमको? Is that clear to you? And therefore, my claim as a today's new point is that there are two types of cumulative frequencies.
less than cumulative frequency is less than upper boundary or upper limit. More than cumulative frequency is more than lower limit or lower boundary. ये सब तुमने स्कूल में किया है, पर कल क्या किया वो भी याद नहीं है, तो वो ए स्टैंडर्ड में क्या किया वो कैसे याद रहेगा ना? ये सवाल है, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अभी कैसे सॉल्व करेंगे? बार बार इसे दोहराओ, पढ़ो, रिसाइट करो, रिवाइज करो, तो फिर ये अपने आप स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. So my first claim in the today's lecture is of cumulative frequencies. It is cumulative, काय? Cumulative नहीं. These are the cumulative frequencies. And there are two types of cumulative frequencies. There are two types of cumulative frequencies. There are two types of cumulative frequencies. अभी पूरा करो ये टेबल. इस टेबल को पूरा करो. If you make a table, then you will become carpenter. If you make a table, na, then you will become what? Carpenter. If you become carpenter, you will have to paint the car. Carpenter. Okay. If you paint the car, your clothes will become dirty. And if your clothes become dirty, then you will be in dirty picture. Okay. So, if you make a table, if you don't make a table, then you will not be able. Right? You will not be able for anything. समझा क्या? तुम टेबल नहीं है तो तुम्हारे पास कुर्सी कैसे आएगी? करो बाळांनो पटकन. Go get it fast. Go get it fast. हो गए हो? कहाँ न समझ गया? हुई गयो कई.
हो गया है क्या तुमका? लेस देन क्युमुलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी मध्ये लेस देन अपर बाउंड्री आहे तर 7 plus 13. So what's the meaning of this? 20 people are getting the marks below 20. 35 people are getting the marks below 30. Look at this now. Below 10. अभी देखो मेरी तरफ. Below 10 there are what? 7. Below 20 कितने हो गए? ये 7 plus ये 13. तो these are below 20 ना? तो 10 to 20 का भी ये upper limit हो गया ना 20. That is how it is below upper limit. So less than means less than upper limit and more than what? Lower limit. तो यहाँ MCQ जो आ सकता है उसको मार्क करो. कहीं तो भी एक कल से काम करो कि अपने साथ वो स्टिकी नोट्स होते कि नहीं, लाल पिवड़े, उसका वो स्टिकी नोट का पैड रखो. और जैसे मैं बोलता हूँ ना कि ये नोट्स है, ये शॉर्ट नोट्स है, ये MCQs है, उसे वहां लिखो और वहां पेस्ट करो, नहीं तो स्टेपल करो. समझा? तुमने प्रिंट आउट निकाला क्या नोट्स का? मैंने कल भेजा था. तो लिखो, कम ऑन, राइट डाउन द पेयर ऑफ MCQs that the less than cumulative frequencies are less than upper limits, or upper boundaries, and more than cumulative frequencies, ये MCQs है, more than cumulative frequencies are more than lower limits. Alright, now these are taken in the downward direction and these are taken in the upward direction. Say yes. Say yes. हाँ, अभी काहे करूं? अभी और कुछ होता है, और ये कुछ इसलिए होता है कि उम्र ही कुछ होने की है ना. ये कुछ क्या होता है? ये कुछ क्या होता है? ये कुछ ऐसा होता है. देखो मेरे तरफ. ये कुछ क्या होता है? ये कुछ ऐसा होता है. ये कुछ क्या होता है? ये कुछ ऐसा होता है कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ वन क्लास प्लस मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास. सक्सीडिंग मीन्स नेक्स्ट क्लास. ये दोनों की टोटल हमेशा 50 होती है, विच इज द टोटल फ्रीक्वेंसी. दैट हैपेंस हियर ऑल्सो. Less than cumulative frequency of one class plus more than cumulative frequency of the next class. This is always going to be equal to the total frequency. In this case it is what? 50. कितने sharp MCQs होते हैं देखो, कितने pointed MCQs होते हैं. ये इस तरीके के क्वेश्चंस की आपको आदत नहीं है 10th स्टैंडर्ड तक और 12th स्टैंडर्ड तक. ये बारीक जो छोटे ऑब्जर्वेशंस होते हैं ना, पिल्लू ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस आपको MCQ बन के आपके सामने आते हैं. ये मॉड्यूल में भी है और फिर पेपर में भी हो. समझा? तो ऐसे बड़े क्वेश्चंस दे विल नॉट आस्क, बट दे विल आस्क द शार्प क्वेश्चंस लाइक दिस. और इसलिए मेरा आपसे एक प्रॉमिस है
और मेरा आपसे क्या प्रॉमिस है? मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि जो क्लास में हमने नोट्स में लिखा है और बाद में आई विल गिव यू द समरी ऑफ दैट, आई विल गिव द टोटल समरी ऑफ द थ्योरी, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके किसी भी अटेम्प्ट में आने वाला नहीं है। ऐसा ना, किसी भी अटेम्प्ट में बोला मैंने, तो वो आने वाला नहीं है। आई विल गिव यू द समरी ऑफ ऑल दिस थ्योरी पॉइंट्स। अभी हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द कंसेप्ट इज, but after that at the end of the chapter I will give you the summary of this. Deliberately I have not given you the summary of that at present, that I will give you towards the end of the chapter. तो फिर फॉर एग्जाम्पल अभी जो चैप्टर शुरू है उसकी देखो मेरी तरफ, उसकी जो समरी है, दैट समरी विल बी गिवन इन दिस फॉर्म। एंड हमारा आपसे वादा है कि इसके अलावा कुछ भी एग्जाम में नहीं आ सकता। अगर कुछ भी इसके अलावा आता है तो यू कैन अब्यूज मी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, आई विल गिव यू द सेंट्रल समरी पॉइंट ऑफ दिस। इससे अलावा एक भी क्वेश्चन फाइनल आंसर क्वेश्चन पेपर में नहीं होगा। एवरी सिंगल सेंटेंस विल बी प्रेजेंट इन दिस, समझा? एवरी सिंगल सेंटेंस विल बी प्रेजेंट इन दिस। देखो यहाँ है वो कौन सा है, देखो, लुक एट दिस, टाइप्स ऑफ डेटा है कि नहीं, टाइप्स ऑफ क्लासेस। ये जो यहाँ लिखा है, ये अगर पढ़ेंगे तो एग्जाम में इसके अलावा एक भी एमसीक्यू आ ही नहीं सकता है। मतलब आएगा नहीं ऐसा नहीं है, आ ही नहीं सकता है। एंड फॉर्चुनेटली because I know the examination papers of last 33 years. I'm teaching since 1990, almost 4. समझा? तो ये इतना होने के वजह से हर पेपर में आज तक के हर अटेम्प्ट में क्या क्या पूछा गया था, it is stored in my brain like the data stored in the computer. I can tell you 1997 में अटेम्प्ट, हाँ अभी वो कभी मई अटेम्प्ट होता है, कभी जून अटेम्प्ट होता है, वो ठीक है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ दैट ईयर which question was asked in this chapter, I can precisely tell you. समझा? एंड देयरफॉर ये सब क्वेश्चंस को अगर पूरा करेंगे तो 33 years मल्टीप्लाइड बाय 2, 30 into 2 करेंगे तो भी 60 पेपर्स के अलावा क्या आ सकता है बोलो? उस चैप्टर में इतना दम ही नहीं है कि 60 पेपर्स के अलावा और कुछ प्रॉब्लम सेट किया जाए या क्वेश्चन सेट किया जाए। समझा? तो जो क्लास में होगा उसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, ये तुम्हारा काम है। और क्या प्रिपेयर करना ये आपको बताना, ये मेरा काम है। That's what I'm telling you right from the day one. That you pass is not your responsibility, is not your sole responsibility. You pass is 70% my responsibility, 30% your responsibility. I teach everything expected, you prepare everything expected and well, and you get full on full marks. Even last attempt of the CA Foundation result that was declared, in all, 43 students had got 90 plus out of 100 in mathematics statistics. It's foundation level, huh? Not 12th standard. 12th standard तो 100 out of 100 वाले होते हैं hundreds में, but in foundation 90 plus, such there were 40 plus students. समझा? So it's possible. Only thing is that today that opportunity is knocking your door, and if you don't open the door for that opportunity, then the opportunity will skip and run away, and then will not come in your life again. आज आपके पास चांस है, सब कुछ प्रिपेयर करो। वी आर गोइंग एब्सोल्युटली स्लो। आई एम गिविंग यू टाइम टू गेट सेट। एक बार सेट हो जाएंगे तो फिर उसमें कोई भी दिक्कत मुश्किलें आने वाली नहीं है। तो व्हाट इज द थर्ड एमसीक्यू टेल मी? व्हाट इज द थर्ड एमसीक्यू टेल मी? दैट द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, the less than cumulative frequency of class plus more than cumulative frequency of the next class
more than cumulative frequency of the next class is equal to the total frequency, is equal to the total frequency, and total frequency is capital H, is equal to the total frequency, and the total frequency is capital what? N. समझो? समझा क्या तुमको? अभी 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 I'll give you a problem, okay? I'll give you a problem. What is the another variety of question that can come in the paper, okay? Take up the question. Income less than 500, less than 1000, less than 1500, less than 2000, less than 2500, less than 3000. Number of people, very important question. Number of people 7, 22, 40, 61, 75, 80. Find the number of people. Find the number of people. Find the number of people getting, having first income more than 2000, income between 1500 and 2500, relative frequency of 2000 to 2500. ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं ना. Once you know the concept, nothing remains in that. Good question. इसे 5 star करो, क्योंकि इस तरीके के questions paper setters love it, and what the paper setter loves, we also had to love. Paper setter loves his daughter, then you also had. समझा? अभी जरा मेरे तरफ देखो, क्या कैसे थिंक करने का है इस पे. ये सब लेस देन है कि नहीं? तो ये लेस देन है, तो ये हो गई, जो दिया है वो हो गया लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज. समझा? कोई लिखेगा नहीं? पहले जरा देखो, अभी लेस देन 500, लेस देन 1000, इसके क्लासेस कैसे बना सकते हैं? तो यू कैन से 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000, ये क्लासेस हो गए. सो क्या करेंगे कि पहले हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप करना पड़ेगा. एंड therefore what I will say is income 0 to 500, 500 to what? 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000. Now, what is given is the less than cumulative frequency. What is given is the less than cumulative frequency. And these are given to be 7, 22, 40. 7, 22, 40. And then 61, 75. 61, 75, 80. ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है. अभी हमें उल्टा जाना है. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालने का है. तो व्हाट आई हैव टू डू इज, इफ यू ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम, द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू.
कोई लिखेगा नहीं, पहले समझो, ब्लाइंड कॉपी करने में कोई मतलब नहीं है। 0 to 500, 500 to 1000. अभी below 500 there are what 7 people. तो यहां there are 7 people and below 1000 rupees there are 22 people. तो अभी मेरा तुमसे ये सिंपल साधा सवाल है, भोला भाला सवाल है कि ये इस क्लास में कितने हो गए? 22 है बिलो 1000, उसमें से 7 है बिलो 500, तो ये उस क्लास में 500 to 1000 कितने हो गए? तो डिफरेंस होगा। एंड देयरफॉर व्हेन आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसीज f, I will have to take the difference in the downward direction. तो यहां है 7, यहां होगा 22 minus 7 that is equal to 15. समझा क्या तुमको ये? फिर यहां क्या होगा? 40 are below 1500. देखो 1500 इसके नीचे है 40 टोटल, लेकिन ये 1000 के नीचे है 22, तो बाकी फिर ये क्लास में हो गए। नहीं, ठीक, यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। वो डिफरेंस कितना आता है वो बोलने में कुछ कौतुक नहीं है। नाउ यू आर ए सीएस स्टूडेंट, जूनियर केजी में ठीक है कि 40 minus 22 is 18 वगैरह, अभी ये एक्सपेक्टेड है ना, कंसेप्ट समझो। तो फिर क्या होगा इधर की 40 minus 22 which is equal to 18, 61 minus 40 this is equal to 21, 75 minus 61 this is equal to 14, and 80 minus 75 this is equal to what? 5. एक बार ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो फिर एक एक सवाल का जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा। हाउ मेनी आर अबाउ 2000? तो अबाउ 2000 में कौन आएंगे? विच पीपल विल कम अबाउ 2000? ये एक 14 और ये 5, बराबर ना? तो अबाउ 2000 का मतलब क्या हो गया? 2000 to 2500 and plus 2500 to 3000. And therefore these are how many people? 14, and these are 5 people, so these people are 19. समझा क्या तुमको? Then my question to you next is what? How many are between? How many are between 1500 and 2005? अभी yes, एक सिंपल सवाल हो गया। तो how which people will be there? Which people will be there? तो ये प्लस, वेरी गुड, ये प्लस ये, समझा ना तुमको? ये प्लस ये, तो these people are 21 and 14, and therefore this is going to be 21 plus 14, this is equal to what? 35. And then my question is, tell me what is the relative frequency of which class? Relative frequency of which class? 2000 to 2500. Now 2000 to 2500. Now relative frequency means what? Is frequency over total frequency. Now what is the frequency of that class? 14. So it will be 14 divided by 50. What you can write as 7 over 25. समझा क्या तुमको? यारे हो बने ना? समझा क्या? क्या करना है? लेस देन मतलब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां कहीं तो भी लिखो कि लेस देन का मतलब होता है less than cumulative frequencies. Less than means less than cumulative frequencies. तो जो दिया है वो cumulative frequencies है, और इसका कन्वर्जन फ्रीक्वेंसी में करना है तो फिर डिफरेंसेस लेना पड़ेगा। बड़ा ना समझा क्या? ये इस तरीके के क्वेश्चंस क्यों पॉसिबल्स होते हैं? क्योंकि यहाँ ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल होता है। हमको एक अटेम्प्ट लगता है समझने के लिए, दूसरे अटेम्प्ट में कहीं चांस होगा, पहले अटेम्प्ट में हमें समझता ही नहीं है। Sir, how is total frequency is 50? 80. Sorry, is it what? 80? तो फिर दिस इज 7 upon 40. समझा क्या बात? You can write here the total frequency capital N is sigma, F is not equal to 50, it is equal to 80. I was testing your concentration, and only boy could tell that, you know. It's a fact, na? Only boy could notice that there is some flaw in that.
क्या कहना है? बोलो, खुल के बोलो. लिखो बाळांनो. Sir, how to understand that is a less than cumulative frequency? लेस देन मतलब लेस देन क्यूमुलेटिव. यहाँ लेस देन दिया है कि नहीं? प्रॉब्लम की तरफ देखो. Sir, लेस देन दिया है कि नहीं? तो इट इज लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. और ये डायग्राम निकालो तो फिर तुमको समझेगा ना. देखो मेरे तरफ, इतना मैकेनिकल मत बनो. यहाँ 500 है, यहाँ 1000 है. अभी लेस देन 500 देर आर 7 पीपल एंड लेस देन 1000 देर आर 22. बट लेस देन 1000 में ये सब आएंगे ना, तो दीज आर 22. तो इसका मतलब इस इंटरवल में कितने आएंगे? इस दिस इंटरवल देयर विल बी 22 minus 7, दैट इज 15. That's what it is. वो उन्होंने लेस देन बोला है ना, क्वेश्चन में बोला है ना. कहां से आया मतलब क्या, कहां से आया? वो क्वेश्चन से आया. समझा क्या तुमको? देखो मैंने ना, yesterday after the lecture I finished in the night at around 12 o'clock midnight. One student sent me the message. I shared that message on the group. He has written so beautifully that these night lectures are giving everything in the summarized form. Plus, we are solving MCQs, so MCQs are building the confidence of writing the test for that matter. And he has made the papers, he has pasted them on the wall and is reading them continuously, those theory questions. That's beautiful, that's boy. Supposingly, that student was a boy because he did not mention his name. But because he said, I love you, sir, I assume he's a boy. You can love, even a girl can love me, because all of you are like my sons and daughters, right? So you can love me, no problem. But the boys will have objection on this. Boys will say, no, we are not like your sons and daughters. We are like your daughters and son-in-laws. धीरे धीरे होगा ना वो. कोई मिला तो है क्या कोई इधर? नथिंग. बेटे इसके शादी में जाएंगे तो ये घूंघट लेंगे, हम पहचानेंगे नहीं इसको. वो लेते हैं ना घूंघट मारवाड़ी. हाँ, काय नहीं लेते? लेते हैं. देखो अब ये आपका दोनों का पारिवारिक मामला हो गया. हमें कोई क्या देखा है? क्या देखा है तूने? मैंने देखा है. मैंने क्या देखा है? हाँ, तो फिर क्या देखा हुआ? क्या देखा? कुछ नहीं देखा सर, माफ कर दो. गलती से बोल दी. अभी शादी की बात हो जाएगी तो गलती तो होने वाली है. हो गया बाळांनो. ये क्वेश्चन तुम करेंगे क्या? कम ऑन स्टार्ट.
start. Take up the question. Now you think originally on that. Marks. About 10, about 20, about 30, about 40, about 50. Number of students 50, 41, 33, 15, 8. Find the number of students first below 30, between 20 and 40. Find the relative frequency of, maybe now this time frequency density of the class 20 to 30. करेंगे तुम? Given you the time. Now this is above, more. So these cumulative frequencies are what? More than cumulative frequencies. तो कहाँ से स्टार्ट करना है? लेस देन में ऊपर से करते हैं. अभी मोर देन में कहाँ से करेंगे? नीचे से करेंगे. काय करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे. कड़ियों कई. कड़ियों कई. Anybody on the screen? करेगी? करो. देखो यहाँ ये पेंसिल सिलेक्ट करना है. This is for pencil. ये इरेज है, कुछ इरेज करना तो ये बीच में. Then you can do it. Oh, wait. No. So all the chance for everyone to present on the screen so that we can also verify whether you really understood or not. And you will get a satisfaction that yes, you had done it on your own. You can go back to the home and tell your parents, I did the question in the class today. They will also feel, yeah, अभी आप लोग बड़ा मोटा झालं. Correct ना? अपना बच्चा बड़ा हो गया. बच्ची ना. Above 10 असेल तरी class 0 to 10 असेल तरी 10 to 10 15. About 10 में क्या होगा? 10 to 20, 20 to 30 ऐसा करना पड़ेगा ना. About 10 मतलब 0 to 10 आएगा ही नहीं उसमें. 10 to 20, 20 to 30 होगा. We can add 60 हाँ. 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 50 to 60 will be the last class. करो पूरे कंसंट्रेशन के साथ.
ये तुमको समझा है क्या? समझा क्या? What she did is that she is starting from the down to up in the upward direction. तो 8 का 8 ही रहेगा. देखो अभी मेरे तरफ 8 का 8 ही रहेगा. फिर यहां 15 माइनस 8 ये 7 होगा. 33 माइनस 7 33 माइनस ये 33 माइनस क्या 15 हाँ 33 माइनस 15 यहाँ तो ये इधर होगा. ये 43 माइनस दिस विल बी हियर एंड दिस विल बी हियर. इट्स जस्ट अ डिफरेंस ना, बट डिफरेंस टेकन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. इज दैट क्लियर? ओके, तो फिर अभी मेरे तरफ देखो. तो फिर अभी मेरे तरफ देखो. ओ बड़ा ऐसा कहीं नहीं. इट डिपेंड ऑन द चॉइस. चॉइस जैसे दिया है वैसे लिखो ना. You don't have to get only the answer, you have to get an answer and match it with the choice given. Choice में जैसे लिखा है उस तरीके से उसे एडजस्ट करो. ठीक है. Look at me. Stop talking. My question to you is now tell me. I consider the marks 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Number of students 6, 11, 18. क्या हो गया? मार्क्स के सामने 6. अब I gave you time. Find the less than cumulative frequencies. Find the less than cumulative frequencies. And find the more than cumulative frequencies. I have given you the time. Come on, start. Time is given to you. And you have to understand time is prime. And if you forget time is prime, then it will be a big crime. What a good rhyme. हो गया क्या?
चलो अभी जरा मेरे तरफ देखो, बाकी कोई बोलेगा नहीं. टेल मी, less than cumulative frequencies are the totals taken in which direction? Downward direction. So 6 plus 11 is 17 plus this is 35 plus this is 44 plus this is 50. More than cumulative frequencies are in the upward direction. And therefore this is 6 plus 9 is 15 plus 18 is 33 plus this is 44 plus this is 50. समझा? Now what I will do is, देखो मेरे तरफ अभी, what I will do is, I would draw the x axis, I will draw the y axis. इस तरीके का क्वेश्चन कोई आपको एग्जाम में पूछ नहीं सकता. सिर्फ और सिर्फ theory can be asked on the basis of that, but that's fine. Let us understand. I will consider the x-axis. I will consider the y-axis. Okay, I will consider the x-axis. I will consider the y-axis. देखो अभी मेरे तरफ. Here, this is the y-axis. This is the x-axis. Well, this is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. I take the frequency. What is the total frequency? 50. So I have to reach till 50. I take this is 5, this is 10, this is 15, this is 20, this is 25. This is 30, this is 40, this is 45, somewhere out here, this is 25, 30, 35, then this is 40, this is what? 45, and somewhere out here will therefore be what? Will therefore be what? Somewhere here. Somewhere here is going to be 50. Do you agree? Yes, sir. Okay. Now what I will do is, I will plot upper limit with less than cumulative frequency. I repeat, I am going to plot upper limit of the class with the less than cumulative frequency. So 10 के लिए है 6 and 10 के लिए है 6 will be approximately here. That point is plotted. Then for 20 this is 17, and when I plot, that point could be here. For 30 it is 35, and for 30 being 35 that point would be here. Then for 40 this is going to be 44, and therefore that point is somewhere just below 45 here. And lastly for 50, this is 50, so that point is going to be here. Now what I will do is, I will connect this, and when I connect this, listen carefully, when I connect this, I will get a curve something like this. This type of curve is called, less than ogive. This is called what? Less than ogive. It's not ogive. It's not ogive. It's not ogive. It's what? Ogive. It's a French word. It's ogive. It is the less than ogive. अभी सवाल MCQ में क्या आएगा? Draw the ogive ऐसा कोई पूछेगा नहीं ना? तो less than ogive is plotted with what? With what? It is plotted with upper boundary with less than cumulative frequency. ये MCQ हो गया. Don't write.
समझा? We'll make a summary note later on. Now what I will do is I will plot the lower limits of the classes. Those lower limits of the classes will be plotted with more than cumulative frequencies. तो 0 के लिए है 50, तो 0 के लिए है 50, that point will be here. समझा क्या? Then for 10 it is 44. So for 10 it is 44, that point will be somewhere out here. Then for 20, this is 33. So for 20 it is 33, 33 is somewhere here like this. समझा? Yeah? आप 20 पे मार्क करिए 10 वाला 20 पे मार्क करिए 20 पे क्या हो गया? मार्क हो गया? तो it should be what? Here? Beside. Should it be here? This is 40 na? Here? No. अरे वो जो 10 वाला है उधर कोई मार्क नहीं किया. 10, हाँ 10 के लिए this is here, right? Okay. Then next one is going to be here somewhere, right? Yes. And this point is going to be somewhere here, right? This point is going to be somewhere out. कितना है वो? 33, 15 है ना? So 15 would be somewhere here, right? And for the last one, this is 40, 40 के लिए है 6. So 6 will be somewhere here. समझा ना तुमको? अभी मैंने इसे कनेक्ट किया तो फिर मेरे को this type of curve मिल गया. And this curve is called the more than ogive. This is called the more than ogive. MCQ is this is plotted with lower boundary with more than cumulative frequency. It is plotted with lower boundary or lower limit with more than CF. अभी क्या होता है जरा मेरे तरफ देखो, हाँ एक मिनट. Well, this is the point of intersection. Do you agree? Do you agree that this is the point of intersection? यहां से अगर मैंने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो वैल्यू मिलती है दैट इज कॉल्ड द मीडियन. हाँ जरा मेरे तरफ देखो, दैट इज नोन एज व्हाट? मीडियन. समझो, सपोज यू पास फाउंडेशन, suppose you pass foundation, suppose you pass foundation, suppose you pass intermediate, suppose you pass final as well, and therefore suppose you become a chartered accountant, therefore suppose you get a good job, suppose therefore you get a good salary, and suppose therefore you get a good secretary, and that good secretary in few moments becomes your good wife. This extremely beautiful wife on an extremely romantic evening comes close to you, more close to you, closer to you, and says, आज आपण कुठेतरी बाहेर जाऊया ना, हम कहीं तो भी घूमने जाएंगे. तो you have a mood to stay back at the home, na romantic evening, beautiful wife, you'd like to stay at home, but I mean, your newly married husband, you cannot say no, so you take out your car, you take out chawat, you take out your car, you start driving the car, ये steering है ऐसा, and that extremely beautiful wife is sitting here besides you. And suppose you start driving that car,
टूवर्ड्स लोनावाड़ा खंडाला, तो ये गाड़ी ऐसे ऐसे आगे आगे आएगी, समझा? अभी यू रीच दैट खंडाला, तो जब तुम पुणे से खंडाला जाते हो तो तुम हॉरिजॉन्टल जाते हो। हॉरिजॉन्टल मुझे वैसे बैठे तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाते हो। और जब तुम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाते हो तो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट बदलता है। And that x coordinate, when you reach Khandala or Lonavala for that matter, that x coordinate is going to become 60 kilometers. Pune to Lonavala. समझा? तो 1 kilometer, 2 kilometers, 3 kilometers, 4 kilometers, 60 kilometers, what is changing? X is changing. Now you reach Lonavala. Now you cannot control. And you say, आता अपन होटल में जाओ क्या? हम होटल में जाएंगे। मतलब शी कैन नॉट से नो बिकॉज शी इज ऑल्सो न्यूली मैरिड वाइफ। तो फिर तुम जाते हैं यहाँ एक होटल में, बरका यहाँ तुम कहाँ जाते हैं? होटल में जाते हैं। यहाँ दैट ब्यूटीफुल रिसेप्शनिस्ट इज सिटिंग एंड both of you go to that receptionist. काय काय झालं? ते खरं स्टेरिंग होतं का अजून काही होतं? तो तुम जाते हैं रिसेप्शनिस्ट के पास और तुम बोलते हैं कि हमको पटकन रूम दो, हमें रूम चाहिए जल्दी। But she says I can give you a room, but that room is on the 10th floor. तुम बोलते हैं वो ठीक है, हम क्या कहीं भी चढ़ सकते हैं। वो बोलते कि चढ़ने की जरूरत नहीं, लिफ्ट है। अभी तुम बोलते हैं कि तुम तुम्हारा देखो, हम चढ़ेंगे। अभी you go in the lift. Go in what? Lifts नहीं, lift. Now you go in the lift. Okay. You go in the lift, both of you. You go in the lift. And that lift starts moving in the upward direction. समझा ना? तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसा जब तुम ये 10 फ्लोर तक जाते हैं तो क्या बदलता है? ये y कोऑर्डिनेट बदलता है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 10th फ्लोर, ये फिर क्या बदलता है? y बदलता है। तो x का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और y का मतलब है हाइट। y का मतलब क्या है? हाइट। तो तुम यहां जाएंगे बरका, तो फिर तुम यहाँ ऐसे लिफ्ट में से जाएंगे, फिर तुम यहाँ पहुंचते हैं, फिर तुम रूम में जाते हैं, मग काहीतरी होता है। अभी वो जाने दो। पर अभी क्या हो गया कि ये जब तुम लोनावाड़ा जाते हैं तो क्या बदलता है? x, और जब लिफ्ट में बैठे हो तो क्या बदलता है? y। अभी समझो तुम इधर हो तो ये तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो समझो 10 किलोमीटर्स का है। तो ये जो 10 किलोमीटर्स एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज कॉल्ड एब्सिसा, दैट इज नोन एज व्हाट? एब्सिसा। और जब तुम लिफ्ट में हो अगर 4th फ्लोर पे जाते हो तो ये वाई कोऑर्डिनेट जो हो गया उसे कहते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट इज वाई कोऑर्डिनेट, मतलब ऐसा ऐसा। समझा क्या तुमको? अभी अगर मैं इसके तरफ देखूंगा तो ये क्या हो गया? ये हो गया एब्सिसा। सो एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ogives, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ogives। किसका इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन किसका? ogives का। कहे
This gives you a median. This gives you what? ये MCQ है. अभी मीडियन का मतलब क्या? That we will see later on in the following discussion, succeeding discussion. But अभी आपको क्या समझना है कि the abscissa of the point of intersection of the two ogives gives you the median. और फिर और एक देखो कि ये जो ओजाइव है ये ऐसा एस शेप्ड कर्व है, तो ओजाइव ये एस शेप्ड कर्व है और ऐसा इन्वर्टेड एस शेप्ड, समझा ना? तो वन मोर एमसीक्यू दैट इमर्जेस ओवर हियर इज ओजाइव इज व्हाट शेप ऑफ कर्व? ओजाइव इज द एस शेप्ड कर्व. देयर आर डिफरेंट शेप्स कर्व्स. ये जो होता है, अगर तुम नॉर्मल प्रॉफिट के तरफ देखेंगे तो शुरू में प्रॉफिट स्टेडी रहता है, फिर वो ऐसा इंक्रीज होता है, तो ये हो गया जे शेप्ड कर्व. कभी कभी क्या होता है कि शुरू में तुम्हारा प्रॉफिट बहुत कम होता है, फिर वो बढ़ने लगता है, ये हो गया यू शेप्ड कर्व. समझा ना तुमको? अगर ये तुम्हारा प्रॉफिट ऐसा बढ़ा फिर कम हो गया, तो दिस इज कॉल्ड द बेल शेप्ड कर्व, क्योंकि स्कूल की जो बेल होती है उस तरीके की रहती है. तो ऐसे डिफरेंट शेप्स है. अभी आपको ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं, लेकिन ये जो कर्व हमें मिला वो क्या है? एस शेप्ड. और ये जो मिला ये क्या है? इन्वर्टेड एस शेप्ड. समझा ना? तो क्या यहाँ एमसीक्यू इमर्ज होता है कि ओजाइव इज द एस शेप्ड कर्व. बड़ा ना समझा? तो फिर अभी एग्जाम्पल लिखो. ओजाइव अभी ड्रॉ करो, लेकिन एग्जाम में दे कैनॉट टेल यू टू ड्रॉ द ओजाइव, राइट? बिकॉज ये एमसीक्यू स्टाइल ऑफ क्वेश्चन है. सिर्फ और सिर्फ जितने स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं वो स्टेटमेंट्स एमसीक्यू के लिए आ सकते हैं, पर अभी समझने के लिए आप डायग्राम निकालो और ये 4 एमसीक्यू जो है उसे लिखो. सर वाय ऍक्सेस वरती क्युमुलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी आणि एक्स ऍक्सेस वरती क्लास पढ़ो. समझा क्या तुमको? Less than ogive is plotted with what? With what? Upper limits with the less than cumulative frequency. More than ogive is plotted with what? With what? Lower limits with more than cumulative frequencies. Abscissa of the point of intersection of the two ogives is a median. लेकिन मीडियन का मतलब अपने को अभी पता नहीं है, वो कल के लेक्चर में समझेगा. And this ogive is the S-shaped curve. Is that clear? Say yes. तो अभी वही ख्यालों में डूबे हो क्या कि तुम्हारे को एक ब्यूटीफुल वाइफ मिली, फिर लोनावाड़ा गए, फिर होटल में गए, फिर लिफ्ट में चढ़े, फिर तू उसके साथ जाने वाला है क्या? ध्यान रखो. हो गया? मैं करो ना फटाफट. Beautiful concepts, very important concepts, and we are going to enjoy every single chapter in the days to come, in the months to come. निकालो जल्दी जल्दी क्या? डायग्राम.
abscissa means x coordinate and y coordinate is called ordinate. लिफ्ट में जाते हो तो क्या बदलता है? y कोऑर्डिनेट. और जब हॉरिजॉन्टल रोड पे जाते हो तो क्या बदलता है? x, दैट इज एब्सिसा. हॅलो, काय म्हणतोय? तुझ्यासाठी मग कोणासाठी? कोणासाठी रे? हो ही गए हो? ये एक्चुअली तुम्हारा सब कुछ हो गया स्कूल में कहा, लेकिन स्कूल में तुमने सिर्फ क्या किया? हाँ, डिब्बा खाया. बाळांनो हो गया क्या? हॅलो, चुकलं. गर्ल आता त्याला काय करणार? क्या करेगी? तू भी क्या करेगी? मैं भी क्या करेगा? समझा बाळांनो? ठीक है, we'll continue with the further discussions. Tomorrow's discussion is going to be very vital and very crucial. We'll continue with that tomorrow.